Hello everyone, I am Kapil Shah and you are watching weekly market analysis by FinLearn Academy. पिछले वीडियोस को रिकैप करते हुए व्हेन मार्केट वाज अराउंड 16,000 लेवल हमारा व्यू नेगेटिव था, लेकिन जब मार्केट ने 16,200 का लेवल ब्रीच किया था वी हैव टर्न पॉजिटिव फॉर द अपसाइड मोमेंटम फॉर 16,600 से लेकर 6,800 तक, लेकिन अंडरलाइंग टोन उसका पॉजिटिव था एंड वी वर हैविंग द व्यू कि जैसे ही 6,800 लेवल क्रॉस करता है वी कैन सी द अपसाइड मोमेंटम अप टू 70,200 टू 7,400 लेवल। तो इस वीक में मार्केट ने 70,170 के अराउंड का हाई बनाया था एंड इट इज सेटल अराउंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली। तो आने वाले वीक में मार्केट का अंडरलाइंग टोन कौन सा है रहने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, कब तक हम ये पॉजिटिव व्यू को होल्ड कर सकते हैं एंड ऑन द हाई साइड कौन से अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकते हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ में सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टॉक स्पेसिफिक भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। Let's understand the Nifty so far. This is the weekend as well as the monthly end. वीक ऑन वीक बेसिस में निफ्टी ने 2.5% के अराउंड की मोमेंटम दर्ज की हुई है, जबकि ऑन मंथ बेसिस पे निफ्टी ने अराउंड 9% की अपसाइड मोमेंटम दर्ज की हुई है। ये मंथ ऑलमोस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ रहा हुआ है रिसेंट टाइम में, तो मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने मिली हुई है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का ढांचा हम अगर देखते हैं सो फ्रॉम द अक्टूबर 2021 अभी तक मार्केट लोअर हाई लो सीक्वेंस में है और उसके दौरान हमें 3 करेक्टिव अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है इंक्लूडिंग दिस वन। तो प्रीवियस जो 2 अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिली थी दैट वाज नियर अबाउट बाय 12 to 15% अपसाइड मोमेंटम। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट करेक्टिव अपसाइड मोमेंटम 12%, सेकंड करेक्टिव अपसाइड मोमेंटम ऑलमोस्ट 15% और थर्ड करेक्टिव अपसाइड मोमेंटम 13% के यहाँ पे अभी हम तक हमने देखने मिला हुआ है। सो मार्केट की मोमेंटम अभी काफ़ी पॉजिटिव है। मार्केट इस अपसाइड मोमेंटम में ऑलमोस्ट 13% की मोमेंटम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मोमेंटम ऑसिलेटर आरएसआई ओवरबॉट जोन में आ चुका है, लेकिन वी आर नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ रिवर्सल साइन। हम एक डेली रेजिस्टेंस बैंड में भी हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई रिवर्सल साइन नहीं देखने मिली है। तो मार्केट का आने वाले वीक में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, कब तक ये पॉजिटिव टोन को हम होल्ड कर सकते हैं, अगर मार्केट अपना इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच करता है सो व्हाट कैन बी द फर्दर अपसाइड मोमेंटम, वो हम आने वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। दैट इज अ निफ्टी आउटलुक। मार्केट का काफ़ी रिसेंट स्ट्रक्चर जहाँ पे हमें 13% अपसाइड मोमेंटम देखने मिली हुई है, एक हायर हाई हाई लो के सीक्वेंस में मार्केट चल रहा है और इन बिटवीन 16,800 का हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच होते हुए देखने मिला हुआ है। सो देयर इज एन पॉजिटिव डेवलपमेंट। 16,800 का लेवल ब्रीच करने के बाद में मार्केट फिर से एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, दैट इज 70,200 टू 70,400 लेवल। Now 70,200 400 level, why it is important, because this is what an inception point of fall from the current market perspective. So let's say this is what the current market level and last time भी market का reversal हमें कुछ इसी level के यहाँ पे देखने मिला था, but the thing is that कि अभी तक हमने कोई reversal sign देखने नहीं मिली हुई है। So underlying tone remains a positive. तो ये अंडरलाइंग टोन पॉजिटिव कब तक रह सकता है? फॉर द नेगेटिविटी टर्न अराउंड या फिर रिवर्सल हमें देखना होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करे और अपने सपोर्ट लेवल ब्रीच करे। सो इन अ करंट कॉन्टेक्स्ट मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था पहले, सो दैट इज इन 16,700 अराउंड। सो मार्केट का अपसाइड मोमेंटम इंटैक्ट रहता है जब तक index is sustaining above the 16,700 level. Moving below the 6,700 level will be the first negative development we can say. Now there is a good distance is that means almost 500 का distance है, but the thing is that कि market फ्रॉम द 15,200 ऑल द वे टू 70,200 की हमें मोमेंटम देखने मिली हुई है। सो ऑलमोस्ट 1600 से 1800 पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम देखने मिली हुई है। सो नेगेटिविटी कैन नॉट बीन कन्फर्म विद इन जस्ट इन 100 and 200 पॉइंट डिक्लाइनिंग मोमेंटम। निफ्टी को फॉर अ नेगेटिव मूव 60,700 के नीचे ही दैट कैन ट्रिगर इन कि प्राइस का ये लेवल है। नाउ एज इफ द निफ्टी कंटिन्यू टू मूव ऑन द हाई साइड, अभी निफ्टी के लिए हर्डल 17,200 से 400 का लेवल है, बट वंस प्राइसेस आर ब्रीचिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि 70,400 का लेवल अगर हमें ऊपर की ओर ब्रीच होते हुए देखने मिलता है, सो इट कैन बी कंसिडर्ड दैट कि फिर से एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। 70,400 के अबाव अगर हमें रेजिस्टेंस लेवल देखने होता है, सो वी कैन कनेक्ट द ट्रेंड लाइन्स कि जो प्रीवियस टॉप्स में हमें एक रिवर्सल साइन देखने मिली हुई थी और काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने मिले हुए हैं। तो लेट्स से कि मैं प्रीवियस टॉप्स को कनेक्ट करता हूँ ट्रेंड लाइन के जरिए। सो दिस इज एन वैलिड ट्रेंड लाइन बिकॉज 3 बार मार्केट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को रिस्पेक्ट किया हुआ है। सो अबाउट द 70,400 लेवल द स्लोप ऑफ दिस ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल।
अभी के पॉइंट पे फ्रॉम अ प्राइस लेवल परस्पेक्टिव वी कांट से दैट बिकॉज इट्स ऑल अबाउट दैट कि कितना टाइम लेता है मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करते हुए, बट दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस वी कैन अंडरस्टैंड. So in a nutshell, underlying tone is in positive. We are in a cautious range at the resistance level, but underlying tone is positive as far as Nifty sustains above the 16,700 level, and on the high side, the falling trend line slope is going to be resistance level point. सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम देखते हैं ऑन वीक ऑन वीक बेसिस एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस पे. तो लेट्स से कि दिस इज अ निफ्टी 50 जो इस वीक में 2.5% से ऊपर था. सो देर आर सर्टेन काइंड ऑफ सेक्टर्स विच इज परफॉर्म वेल. सो लेट्स से कि मेटल्स, मीडिया, आईटी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है. मेटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने मिला हुआ है इस वीक में भी, एंड ऑन मंथ बेसिस भी मेटल ने 17% का मोमेंटम दर्ज की हुई है. मीडिया सेक्टर इज अप बाय 5%, बट मेनली द मीडिया सेक्टर्स में PVR stock is moving quite well. Because of that you will see the upside reading on this, and whereas Nifty IT के जो dead cat bounce that we are able to see in this, and CPSE PSE stocks अपने support level से वो भी ये sectors भी revive कर रहे हैं. On the bottom side you will see that कि Nifty Auto, FMCG जो पहले के काफ़ी टाइम पहले के एक काफ़ी टॉप परफॉर्मेंस सेक्टर रहा करते थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल रहा है या फिर उनकी मोमेंटम हल्ट हो चुकी है. सेकेंडली इस टाइम पे looking at the broader market indices like Nifty large cap, mid cap and small cap. So large cap and mid caps are into the momentum. Small cap में इतनी momentum नहीं आ रही है. So Nifty being up by 2.5%, small cap यहाँ पे भी आपका week on week basis में भी 0.5% भी momentum देखने मिलते हैं, और this is on a monthly time frame returns. तो monthly time frame return में भी small cap is coming quite on the lower side actually. So there is a little bit underperformance in a small cap perspective we can say. So let's say on a month on month basis Nifty has given the return near about by 8%. So mild small notch on the downside. Nifty small cap return यहाँ पे देखने मिल रहा है. So auto, pharma, IT on a monthly scale they have underperformed. Metals, reality, PSU banks, private banks, they are doing well. So looking at the broader perspective and the technical chart perspective, banking stocks, specifically the private banking stocks, they are into the momentum. Metal stocks they are doing well, but एक resistance level पे के ऊपर भी उन्होंने ब्रीच किया हुआ है, but as of now we are not seeing any reversal sign. तो momentum वहाँ पे भी लग रहा है. But looking at in a technical charts, CPSE and PSE, that is non-energy related stocks can do well. Means let's say like in a different kinds of the stocks are there which can have the good momentum. And looking at an IT sector में we have seen the two structures from the time wise perspective and from the price wise correction. तो इसका price wise correction that has happened recently, लेकिन अभी उनका time wise correction हमें देखना मिलना बाकी है. So we believe that Nifty IT is like in a consolidated patch or resistance we can utilize it for the short opportunities, and support levels we can utilize as for the buy opportunity for the short term trading perspective. So this is what an outlook for the sector perspective. This is what the broader representation of the sectors in the markets movement. फ्रॉम अ सेक्टर परस्पेक्टिव इफ वी कैन रिकलेक्ट, CPSE सेक्टर ने काफ़ी पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता और इस अपसाइड मोमेंटम में भी इट इज़ स्टार्टेड टू परफॉर्म क्वाइट वेल. तो स्टॉक हम CPSE सेक्टर से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, एंड लेट्स से कि वी आर पेइंग अटेंशन ऑन द BEL, दैट इज भारत इलेक्ट्रिक. सो from a index perspective it belongs to the Nifty mid cap, not from the small cap. From a broader category perspective it is in industrial manufacturing, which is this sector in a general doing well, and sub sector wise it is in electronics and equipments we can say. Now I am just trying to measure that how that particular market has moved, and along with that how that particular stock has responded. So when the market was up by 17%, so this is the first column that we can understand, and in response to that in this particular time this index has improved by 9%. So when the market was down by 10%, it was down by 6%. When the market was 10% up, it was 11% up. When the market was 13% down, it was just down by 1%. And when the market was 14% up, so it did nothing much. So fall में ज़्यादा गिरा भी नहीं, upside momentum में ज़्यादा ऊपर गया भी नहीं. But this particular thing, if you are seeing that कि जब भी market 15% down था, it was up by 17%, and when the market is up by 12%, so it is improved by 17%. So overall ranking is like 6% across all the average. If we take that is 6% we can see. So from Excel sheet we can understand that it has started to outperform the market in this particular specific swings. Now technically if we just try to understand this particular stock, so let's say it is in a monthly chart or no BEL,
one thing to just to share in a curiosity purpose, कि long term moving average. So let's say कि from almost 25 years, this long term moving average has acted as a very good support level or resistance level. So let's say कि this particular yellow line that I am trying to indicate. So resistance, thereafter it has acted as support, it has acted as support, and it has acted as support, and from that we are seeing a very good bounce. Whereas on the lower time frame, if we can see, let's say like in a weekly chart, so every time prices has tested at a white color line, and we have seen some sorts of upside momentum. At a daily chart, prices has taken a support level near about by this, it has broken the falling trend line, and again the fresh resumption in the momentum that we have seen. So in the previous week, stock is at an all-time high level, which is a good sign in current market scenario, and based on this particular thing we are expecting that it can improve further. So फिलहाल 275 पे चल रहा है, so 275 to 270 we can make it as a kind of accumulation range, and the recent bottom that we are seeing around 263 around, so that can be the stop loss on the downside, and on the high side as we are taking such kind of risk and based on the extensions, 300 level can be the upside potentials. So in nutshell, 275 to 270 is like an accumulation range, 265 below on a closing basis, that is a stop loss, and on the high side 295 to 300 level, that is the upside potential for it. So whatever the things about the market, sector and stocks that we have discussed, that is for the educational purpose only. Thank you so much and see you in the next video.